Good evening, everyone, and welcome to this episode of Beyond Classroom. जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी is on state visit to Indonesia. Now, Indonesia, if we consider in broader terms of Indo-Pacific Pacific region के terms में सोचें तो it becomes a very important country. This particular visit of Prime Minister Modi, it's not just a diplomatic move but a strategic move as well, which is going to shape the shared future of both nations. So today in this episode we are going to dive deep into different aspects of India-Indonesia relationship and also considering few things about their positioning with respect to Indo-Pacific region. So starting from the recent visit, I would like to ask my first question to Ravi sir. Sir, what was the recent developments regarding this particular visit जो मोदी जी ने अनाउंस किया वहाँ पे? Sir, actually, if we see, our Prime Minister is on a visit to 3 states. One is Indonesia, the other is New Zealand and Australia. तो यहाँ पे 2-3 एस्पेक्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि वाई वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और अभी हमने इंडोनेशिया में क्या किया है उस पर आने से पहले, ताकि बच्चों को ये समझ आए कि हम क्यों उस तरफ देख रहे हैं, जो हम बोलते हैं एक्टिस्ट पॉलिसी। पहले लुकिस्ट थी, अब हम एक्टिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो मेजर चीज़ है आज की डेट में, दैट इज रेयर मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स। उससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि जब हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो एक जो हमारी इंपॉर्टेंट बात हुई है, दैट इज द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेसिफिकली निकल की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया हैज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ निकल, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल, और अभी सबकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है, हम जानते हैं। सो वन एमओयू दैट वी हैव साइंड इज फॉर द रेयर अर्थ मेटल, कि उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हाउ टू मेंटेन द सप्लाई चेन और बिल्ड द सप्लाई चेन। दूसरी जो मेजर कोलैबोरेशन, अगेन सीइंग लुकिंग टुवर्ड्स चाइना एंड काउंटरिंग चाइना को ही देखते हुए, ना कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड बट डिफेंस के बेसिस पे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस टाइज डेवलप कर लिए इंडोनेशिया के साथ। यहाँ पे जो देखने को मिले, जैसे हमने एक $200 मिलियन का इंडोनेशिया हैज साइंड अ डील टू प्रोक्योर 2 ब्रह्मोस बैटरीज फ्रॉम इंडिया। अब ये 2 ब्रह्मोस बैटरीज की अगर हम बात करें तो मतलब एक बैटरी के अंदर से 4 लॉन्चर्स होते हैं और 12 रेडी टू यूज ब्रह्मोस मिसाइल होती हैं, विच आर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। ये हमने बहुत पहले रशिया के साथ डेवलप की थी, और अभी हमने थोड़े दिन पहले इनका इम्पैक्ट भी दिखाया, या आपने कही है कि हमने दिखाया कि कैसे काम करती हैं ऑपरेशन सिंदूर। तो उसके बाद अब हमने इसे थर्ड कंट्री इंडोनेशिया होगी जो हमसे ये डील साइन कर रही है टू परचेज ब्रह्मोस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि अभी तक इंडिया वॉज द परचेजर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, लेकिन अब हम ईस्ट में ऐसी कंट्रीज देख रहे हैं जिन्हें डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत है और वो हमसे खरीदेंगे। तो पहली चीज है ब्रह्मोस। दूसरा, एयर टू एयर मिसाइल्स अस्त्रा हम इन्हें सेल करने वाले हैं, उसके लिए भी हमने एक डील साइन की है। तीसरी सर, जो यहाँ पे डिफेंस के अंदर ही हमने बात की है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट अगर आप समझें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के एकदम टिप पे, नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगा सबांग पोर्ट, विच इज ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोनों अभी न्यूज में चल रहे हैं, इंडिया इज डेवलपिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अब हम इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट भी डेवलप करेंगे उनके साथ मिलके, विच इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मैनेज अनदर चोक पॉइंट। जैसे अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात करते हैं, ऐसा ही एक चोक पॉइंट एशिया के अंदर आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बेसिकली हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखिए तो वर्ल्ड का ग्लोबली 40% ऑफ ट्रेड यहाँ से होता है। और नॉट जस्ट दैट सर, ग्लोबली मेजर जो हमारा काउंटर है दैट इज अगेन चाइना, क्योंकि चाइना हैज बीन डेवलपिंग दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अगेन एंड अगेन, और उसको काउंटर करने के लिए अब हमने ये डेवलपमेंट शुरू किया, जहाँ पे हमें पता है कि चाइना के लिए एक चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का ऑलमोस्ट जितना भी एनर्जी इंपोर्ट है वो सारा का सारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होता है। वो कनेक्ट करती है आपकी, आप देखिए कि पैसिफिक ओशियन, और आपका दूसरी साइड आप देखेंगे तो हम बात करते हैं साउथ चाइना सी, तो वहां से ही सारी सप्लाई जाती है। तो डिफेंस में ये मेजर इक्विपमेंट, मेजर एमओयूज या मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। रेयर अर्थ मेटल हमने बात कर ली है क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्टील, तो सेल के साथ हम एक स्टील इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, स्टील स्लैब प्रोडक्शन के लिए वहां पे। नेक्स्ट इज सर एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पे मेजर एमओयू साइन किए गए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 100 टन ऑफ आपके हाई क्वालिटी DWR 162 व्हीट सीड्स दिए हैं।
अब यहाँ पे दो चीजें हैं सर, एक तो हमने सीड्स दिए हैं ताकि वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट ग्रो किया जा सके। इंडोनेशिया हमसे बहुत सारा एग्रीकल्चरल चीजें लेता है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं 1950s में, जब इंडोनेशिया को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखेंगे कि इंडोनेशिया ने हमें बहुत सारा राइस सप्लाई किया था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर सूखा था और हमारे पास राइस नहीं था। तो इंडोनेशिया ने राइस दिया था अंडर द एग्रीमेंट कि आप हमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आज हम वो टेबल्स हैव टर्न्ड अराउंड, आज हम अच्छा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कुछ चीज, हाई वैरायटी हाई सीड्स प्रोडक्शन वैरायटी जो वीट्स की है, हम उसे सप्लाई करेंगे। इसके अलावा सर हमने जो और एग्रीमेंट साइन किए हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी को लेके हैं, जैसे कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर जैसे हम यूपीआई की बात करते हैं तो वी हैव लिंक्ड अवर यूपीआई विद द QRI सिस्टम है जो उनका इंडोनेशिया के अंदर, उसके साथ लिंक किया गया है। फिर हमने एक इंडियन गवर्नमेंट ने ONDC डेवलप किया हुआ है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उसको उसी की तर्ज पे उनका एक ION बनाया जाएगा, इंडोनेशियन ओपन नेटवर्क, तो हम उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। सो इंडिया इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस, सो वी आर सप्लाइंग अवर टेक्नोलॉजी, गिविंग देम द स्टैक्स की कैसे बिल्ड किया जा सकता है और कैसे वहां पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ एजुकेशन और स्पेस पे हमने बात की है, जैसे IIMB विल ओपन देयर सेंटर इन वन ऑफ द SEZ इन इंडोनेशिया। तो ये हमारे एकेडमिक टाइज को बिल्ड करने के लिए है सर। उसके अलावा हमारी जो इसरो है और उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उसके थ्रू हम सपोर्ट करेंगे टू प्रोवाइड देम सैटेलाइट फैसिलिटीज और टू डेवलप देयर स्पेस फैसिलिटीज। तो इस तरीके के कुछ मेजर हमने चीजें यहाँ पे साइन की गई हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को आपका स्टेट ऑनर दिया गया है, नेशनल ऑनर दिया गया है। इट इज द 35th ऑनर दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम इंडोनेशिया नाउ एंड ही हैज बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव इट, राइट। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू को इंडोनेशिया ने दिया था। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए फैक्ट जानना, क्योंकि जनरली जहाँ पे गए हैं तो फर्स्ट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को पहले मिला हुआ है, right? These are some of the major new developments that has taken place, sir. Okay, sir. Sir, I would like to come to Manjul, sir. सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो आ रही है, एक उसके पीछे एक टेम्पल है। कैन यू टेल अबाउट दिस कल्चरल कोलैबोरेशन के डायरेक्शन में जो इंडिया इंडोनेशिया कर रहे हैं? सो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रम्बानन टेम्पल। तो ये प्रम्बानन टेम्पल जो है ये 9th सेंचुरी AD का ये आपको टेम्पल है, और ये अभी जो आपका इंडियन PM और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो मिलकर उन्होंने इनॉग्रेट किया है, बेसिकली वो इनॉग्रेट किया है रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो अब इसमें क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन रिस्टोरिंग द एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रम्बानन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देयर आर अराउंड 240 टेम्पल्स हैं, और इसमें जो सेंटर में आपको शिव जी का जो टेम्पल है तो वो 47 मीटर टॉल टेम्पल है। तो 47 मीटर टॉल टेम्पल है। लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल, लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेम्पल नॉर्थ में है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल साउथ में है। और ये प्रम्बानन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स इसलिए बहुत फेमस भी है कि जब भी पूर्णिमा, जो कहते हैं ना कि फुल मून, तो मई से लेकर अक्टूबर तक जब भी आपको पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो उस समय रामायण बैलेज होते हैं। यहाँ के जो ओपन थिएटर है वहाँ पे रामायण बैलेज होते हैं। तो इसलिए ये कल्चरली और इंडिया को पूरा कनेक्ट करने के लिए पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश की हम बात करते हैं, तो हम हमेशा कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में शुरू से हम ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये यहाँ पे एक ऐसा टेम्पल है जिसमें आप देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपको हैं, और दीज आर दी 3 मेजर टेम्पल्स। अब इसमें क्या है कि इसका जो कंप्लीट रिस्टोरेशन होगा वो ASI मिलके जो है इंडोनेशियन अथॉरिटीज के साथ मिलके करेगी, और उसी को अभी वेडनेसडे को ही जो है आपको इनॉग्रेट किया है इसका पूरा रिस्टोरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि हाँ, आपका एक कनेक्ट होता है कि हाँ, आपकी एक प्रेजेंस है वहाँ पे। जितने भी इंडियन हैं कि आप देख रहे हो, जैसे इंडिया में ASI जितने भी टेम्पल्स हैं उनको आपको रिस्टोर कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, कंजर्व कर रही है। सो सेम थिंग नाउ ASI विल बी डूइंग देयर, बिकॉज इट्स अ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर मेनी टेम्पल्स। तो ये है प्रम्बानन टेम्पल जो आपका फेमस है, 9th सेंचुरी, मोर देन 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है ये। अच्छा, सो सर, इंडिया एंड इंडोनेशिया को कल्चरली बहुत क्लोज माना जाता है। इनफैक्ट रामायण के बहुत सारे एपिसोड्स वहाँ पे होते हैं, और कई सारे लोग बाली वगैरह टूरिस्ट भी जाते हैं इस सब चीज़ों में। तो हाउ इंडोनेशिया इज कल्चरली सो क्लोज टू इंडिया, उसके पीछे क्या कहानी है? कल्चरली जो कहते हैं ना कि हमारी जो ये हिस्ट्री है, कहते हैं कि आपको राइट फॉर्म दी नहीं होता कि फर्स्ट सेंचुरी से ही स्पाइसेस के थ्रू आपको जो कहते थे ना, स्पाइस जो इंडिया जो है सबसे पहले ट्रेडिंग जब स्टार्ट हुआ तो स्पाइसेस जो है यहाँ इंडिया से ट्रेडर्स जो है गए वहाँ पे। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट साइन है जहाँ पे इंडियंस नहीं होता कि विजिटेड और आपको ट्रेडिंग के लिए विजिट किया।
और जब आप ट्रेडिंग के लिए विजिट करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे विजिट गए, कुछ लोग वहाँ पे सेटल हो गए, तो आपको कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, लैंग्वेज एक्सचेंजेस होते हैं, देयर आर मल्टीपल एक्सचेंजेस अलॉन्ग विद दी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। जो पहले आपका बार्टर सिस्टम था तो आपको एक्सचेंजेस चलते थे। फिर आपको डेफिनेटली 2-3 यानी कि वहाँ पे जो किंगडम रहे हैं 7th सेंचुरी अराउंड में, जिन्होंने बुद्धिज्म को, जैसे इंडोनेशिया में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने कभी रूल नहीं किया इंडोनेशिया पे, इंडिया नेवर रूल्ड इंडोनेशिया, दे एक्टेड टुगेदर। तो वहां पे जितने भी किंगडम रहे हैं, दे देमसेल्व्स हैव प्रोमोटेड बुद्धिज्म, दे देमसेल्व्स हैव प्रोमोटेड हिंदुइज्म। और वहां पे जितने भी टेंपल कॉम्प्लेक्स बने हैं, ऐसा नहीं था कि कोई इन्वेडर गया वहां पे अटैक किया और इसने किया, वहां पे जितने भी किंग्स थे, जितने भी किंगडम थे, दे देमसेल्व्स। तो इसलिए अब क्या होता है कि द प्लेस विच हैज बीन अ काइंड ऑफ a main reason for your Hindu temples, upbringing, culture, tradition, language as well as वहाँ पे संस्कृत, आप जो देखेंगे कि इंडोनेशियन लैंग्वेज में मेनी टर्म्स दे आर पार्ट ऑफ योर संस्कृत, जो रूट है जीवा, भाषा, ये सारे टर्म्स आप देखोगे कि इंडोनेशियन लैंग्वेज में भी है। तो रूट वर्ड्स कहाँ से आता है आपको? संस्कृत से आता है। अब आप कनेक्ट किससे करते हैं? कहते हैं कि कल्चर एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर, पीयूष सर थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। तो कल्चर जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी में एक तरह से सॉफ्ट पावर का बात काम करता है, जहां पे आप कनेक्ट फील करते हो। तो इंडिया का और इंडोनेशिया का एक कल्चरल जो कनेक्ट है, दैट कल्चरल कनेक्ट से क्या होता है ना कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उनकी लैंग्वेज से आप कनेक्ट कर रहे हो, उनके कल्चर से कनेक्ट कर रहे हो, ट्रेडिशन से कनेक्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट। और पूरा आपको कहते हैं पूरा एंटायर रिलेशनशिप, जो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, नेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, इट इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी। और ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी के लिए यहाँ पे कल्चर जो है आपको प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट की रोल। सो देयरफॉर अब इंडिया यानी कि बहुत ही अच्छा मूव है कि डेफिनेटली आप क्या करो, कल्चरली भी स्ट्रांग करो कि द पीपल देयर हियर ऑल्सो। आपको इससे डेफिनेटली टूरिज्म में भी प्रमोट होगा कि टूरिज्म आपको डेफिनेटली इट विल बी मोर नहीं होता कि टेंपल बेस्ड जो आपको टूरिज्म है दैट विल बी ऑल्सो प्रोमोटेड। देयरफॉर इट इज अ गुड साइन। Okay, sir. Thank you, sir. So, Piyush, sir, sir, we'll come to the broader aspect of this relationship. But first, sir, we have seen, sir, that in ASEAN region, there is a growing defense ties of India. And right now also, if we see that India and Indonesia, their defense ties are growing further. So how do you see this growing defense ties in context of broader regional security? Okay, that's a really good question. So first, let's understand what are the conditions of the entire Southeast Asian countries, considering three major power centers. One is US, the other is China, and the third is India. Traditionally, Southeast Asian countries, before the rise of China as a major power, were much closer to the US and its alliance system. And many of the Southeast Asian countries were directly or indirectly part of the greater security architecture of US in the region. There was a CA2 famous security architecture was there, specifically during the Cold War. But along with that, there was a domination of US in the region. There was a proper Pacific command was there, and US has a range of air base, naval base, presence of the US Army in the entire Southeast Asia. If I include East Asia, specifically Japan, then it looked like that it is a fortress of United States of America. There are many naval ports. It's in Philippines, it's in Japan, it's in Singapore. Even if you go for the island, there is a US ports are there. Only in Japan, there was more than 55,000 of US soldiers over there. More than 30 sites, military sites are there in 2-3 countries. Philippines is one of the major base for the US. So what I am trying to say, there is an over dominance of the US in the region, and these countries are relatively looking forward to be out of that. Now, once the rise of China happened, China welcomed them in terms of making them beneficiary of their growing economy. If you look into the largest trading partners of China and other countries, so many of the Southeast Asian countries have a very substantial trade with China, including Indonesia. And Indonesia is the biggest, largest trading partner of China. It's more than 150 billion US dollar trade between China and Southeast Asian countries. So the Chinese
rise in the Southeast Asia was more economic in nature. A kind of economic structural integration happened between China and these countries basically. Now, after that, China went for a political and strategic push in the region because of its rivalry towards the United States of America, and China consistently pushing out presence of US in the region. So this Southeast Asia become a theater of conflict between China and United States of America. Now with this issue, the centrality of the Southeast Asian nation started going back in the background. Now the Southeast Asian countries want to establish the centrality of the entire Southeast Asian. The centrality in that sense ऐसा नहीं हो कि they are talking about the broader Indo-Pacific and the presence of the Southeast Asian countries is negligible. Their views, their ideas are not acceptable because two giants are fighting over there. So that's simple. They want back their centrality in the region. Now how they can get back their centrality in the region? So they want to make a distance with the US, but they do not want to go much closer to the Chinese side. So here the entry of India is there. India with a lot of economic potential to collaborate, I'm not saying to replace China, but to a certain extent become a mild option of China over there, and can be a strategic partner, security partner in the region, because there is a lot of convergence between Indian security and Southeast Asian country. And India continue to support the idea of centrality of the ASEAN country. If I'll identify in regional security architecture, what are the convergence between ASEAN and Indian vision? So the first we are going to find out the centrality of ASEAN countries, strategic autonomy. That's most of the Southeast Asian countries are willing to go with the idea of strategic autonomy, not to be completely driven by China nor by the United States of America. So India is the one itself pursuing the strategic autonomy, completely respect the strategic autonomy streak of the other country. That become a very important thing. Then the third important thing is that the economic diversification, because all these countries are highly dependent on China in their economic dimension. So they also want economic diversification. We also want economic diversification. So there is a proper convergence. And finally, because of the South China Sea and asymmetric power of China and rest of the countries, there is a dominance of China in terms of maritime over there. And the Chinese, as I said in earlier talk also, Chinese are not going to sell arms to these countries, specifically which can deny the Chinese free movement or easy movement in the region. India is the best option for them. Like the BrahMos is a very classic example how they can restrict the Chinese free movement in the region, or the control over the many points in the entire Southeast Asian countries. So this is something India is very well placed in economic calculation, security calculation, strategic calculation, of political calculation of Southeast Asian countries, looking into the dominance of China and the presence of the United States of America. So overall, this is something a very big deal from the perspective of the Southeast Asian countries. And everyone is aware, sir also explained the same idea, that actually the Southeast Asian countries are the central figure in India's Act East policies. And it is the base. From here, you can expand to the entire East Asia up to the West Pacific or entire Indo-Pacific, you can say. Just want to highlight this, what we say twin gate strategy. Twin gate strategy is saying Indonesia is the gate of many straits. It's not only the Malacca Strait. You find Sunda Strait is also there. Now, if the presence of Indonesia is on the other side of the sea is there, so Indian presence is also on this side of the sea. Means if India, Southeast Asia, Australia, if you see in the map, if these three countries have their close security and strategic tie, they can create a complete control over the movement of shipments from Indian Ocean to the Pacific basically. So
I believe that this is something a great initiative from the Indian side. Obviously, there is a limitation for Indonesia and many of the Southeast Asian countries to adopt the complete strategy of India, but definitely it is a very good news for both of the groups basically. So, sir, can you elaborate further on how India and Indonesia they are positioning themselves with respect to Indo-Pacific Okay. geopolitics? No, Basically, this is a very important thing. But to understand in greater perspective of Indo-Pacific geopolitics, the vision of India and the vision of Indonesia have certain similarities, but also have certain differences. Now, when it comes to what is similarity, what is similarity? Now, the first important point, the multipolar Asia. This is one of the most important or central point of Indo-Pacific region. India also want multipolar Asia, and Southeast Asian countries also want a multipolar Asia. Southeast Asia is also worried about China-centric order. India is also worried about China-centric order. Interestingly, India and Southeast Asia, Indonesia, both are worried about even the US-centric order in the region, which was in the pre-90s. So, multipolarity is the common key in the Indo-Pacific region. Now, when it comes to the second point, both want a greater interoperability in the region. Like India can freely operate close to the Southeast Asian borders, and even they can easily move to the Indian Ocean region. This is another important point basically, where the common convergence is there of the interoperability is there. India support their idea of strategic autonomy. They also support ourselves in strategic autonomy positioning. Now, where is the difference? Where is the difference? Although we are talking about this close mineral cooperation, but there is certain issues also. One, though I spoke of, Indonesia is the largest trading partner of China, 150 billion. It is a major restriction over Indonesia to be much closer in defense and strategic cooperation to the Indian side. So that is a major limitation. China won't allow easily Indonesia to come closer to us, and they also won't lose the Chinese business over there. But it is not only this, the massive infrastructural development program in Indonesia, like BRI, is very welcomed by the Indonesia. That is also an important factor, and we are almost directly or indirectly opposing the BRI basically. That's another major line of difference, because the infrastructural thing will help China in downstreaming vision. Downstreaming vision means that Indonesia does not want to be just the exporter of these critical minerals. They themselves want to convert into EV batteries and want to sell out to the world. But who can help them better? Is it the India or is it the China? They understand Chinese can be more helpful to them, but they are at the same time worried about economic over dependence over China. So they look for the diversification also. So what I am trying to say, there is a convergence and there is a difference between Indian vision and Indonesian vision in the region. Now India is more open for strategic security and economic cooperation, but the Indonesia has the limitations because of its economic over dependence, because of the Chinese investment. Chinese tech investment is very high over there, and they never want to go for the Western tech investment. That's very costly, and somehow they also lead to a kind of Western imperialism. So Indonesia will always going to rely on China, but gradually they look for the diversified to the Indian side. So the scope for much economic benefit is limited. Where that cooperation can go deep, that's your maritime domain awareness, fighting against maritime terrorism, radical forces over there, pirates over there, developing a kind of security architecture to ensure the free trade over there, are to somehow project India as a mild balancer in the region with the Indian presence of ships and warships in the region, purchasing Indian missiles and arms and ammunition in the region. So it may raise the cost of China
to completely surveillance the entire region. So there is a lot of convergence. There is a lot of difference. Okay. Ravi sir, as Piyush sir has highlighted कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया की चाइना पे. So if we see India-Indonesia relationship from economic ties lens, so how do you see it's progressing further? Sir, it is not comparable to China, obviously, as sir has already mentioned. But if you see India and Indonesia, India is one of the very big partner for Indonesia when we talk about the economic relations. We have a deal of almost 28 billion, or you can say $30 billion, right, which is almost 1/5 of China, but it's a huge number. And the good part over here is, from Indonesia's perspective, is that this trade from India's perspective is very negative. Out of this $28 billion, $22 billion is something that we import, and only $5 billion is something that we export. Now we need to understand what we are importing. So we are importing two major things. One is coal. We are the second largest importer of coal from Indonesia. Indonesia is rich in these kind of minerals. And जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोल इस्तेमाल करते हैं, हमारा मेजरली कोल कहाँ से सप्लाई हो रहा है? इंडोनेशिया से सप्लाई हो रहा है. एंड उसके बाद अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए. दूसरी चीज जो हम यहाँ से लेते हैं, दैट इज पाम ऑयल. Edible oils, specifically palm oils, we are the largest buyer of palm oil from Indonesia. So yes, we are a huge market for Indonesia. इसी ट्रेड इम्बैलेंस को हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहते हैं, जो आपको हमारी डिफेंस डील्स के साथ दिख रहा है या बाकी चीजों के साथ दिख रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज माइनर डिफेंस प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड अगर हम बात करें तो रिफाइंड पेट्रोलियम, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट कि हम रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं. तो हियर इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट टू यू कैन से इंडोनेशिया, जहां पे हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि सर ने बताया कि दे हैव अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी. अब वो भी चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हो, किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो चाइना हो. तो यहाँ पे इंडिया इज बेसिकली प्लेइंग अ मेजर रोल, क्योंकि इंडिया हैज अ टेक्नोलॉजिकल एज एंड एडवांसमेंट. तो जहाँ पे हम उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं और उन्हें टेक्नोलॉजिकल सप्लाई देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप देखेंगे अभी रिसेंटली उन्होंने एक और एमओयू साइन किया जहाँ पे वो कह रहे हैं कि दे विल टेक हेल्प टू डेवलप देयर ओन ईवीएम्स. इंडिया ने जैसे अपनी ईवीएम बनाई है वैसी ईवीएम मशीन्स बनाएंगे. तो इस तरीके की चीजों से क्या होगा कि हमारा जो ये ट्रेड बैलेंस, ये जो ट्रेड नेगेटिव है हमारे लिए, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इसे हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड भी राइज होगा. तो दैट इज वन थिंग कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें सर. और जैसे पीयूष सर ने एक और बात की कि जो है हम एक वन ऑफ द एरिया वेयर द कोऑपरेशन इज possible or needed is maritime cooperation. So how do you see this India-Indonesia maritime cooperation? सर इंडिया एंड इंडोनेशिया अगर हम मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें तो मल्टी लेवल पे हो रही है. जैसे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हैज एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ द इंडोनेशिया, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज बोली कि वी डू नॉट बिलीव इन एक्सपेंशनिज्म, वी आर फोकसिंग ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ यू कैन से मैरीटाइम फ्री मूवमेंट, राइट, या कीपिंग द इंटरनेशनल वाटर्स फ्री. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो हमने वर्ल्ड में देखा वेपनाइजेशन ऑफ वाटर या वेपनाइजेशन ऑफ शिपिंग रूट्स, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वहां पे यही सेम कंडीशन यहाँ पे कल को बन सकती है. तो इंडिया कह रहा है कि हम इसलिए सप्लाई नहीं कर रहे हैं या इसलिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेट निकोबार हो, चाहे जो भी हमने पोर्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं साथ में इंडोनेशिया के. सो द रीजन इज कि हम इसे वेपनाइज ना होने दें, प्रोटेक्ट कर सकेंगे, फ्री फ्लो बना रहे. दैट इज वन एस्पेक्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ह्यूज एरिया फॉर ट्रेड. सेकेंड, अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे मैरीटाइम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है और जो हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं साबांग पोर्ट, 160 किलोमीटर और डिफरेंस है, और इसके बीच में बहुत सारी फिशिंग होती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, टूरिज्म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं. तो वहां पे देयर इज अ स्कोप जहां पे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं टू डेवलप दिस रीजन एंड टू कीप दिस रीजन सिक्योर एज वेल. तो दैट इज अनदर मैरीटाइम एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे हैं. तीसरा सर, इंडोनेशिया इज एन आइलैंड नेशन और हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड हैं छोटे छोटे जिनसे वो बना हुआ है. जैसे कुछ हमने अभी नाम लिए, बाली हो गया, जकार्ता हो गया, जावा हो गया. तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड दे हैव अ वेरी बिग थ्रेट दैट दे आर सीइंग, दैट इज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो जब हम मैरीटाइम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया हैज अ पॉलिसी जहां पे सागर को उन्होंने अभी अपडेट करके महासागर पॉलिसी की बात की गई है. तो अंडर ऑल दोस थिंग्स हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एंड फ्री एंड सेफ मूवमेंट ऑफ कार्गो की बात कर रहे हैं. दीज आर द थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑन विच वी आर वर्किंग विद इंडोनेशिया. Okay. Manjul sir, governance is a very important aspect for any country. So अभी
जो डिजिटल गवर्नेंस में देयर सम कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया इटसेल्फ दे वांट कि जो उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है उसमें इंडिया उनकी हेल्प करे. सो हाउ डू यू सी दैट दिस इज पॉसिबल बिटवीन India is देम? becoming a kind of major push and major partner in ensuring that Indonesia also has a kind of नहीं ताकि e-commerce, e-market develops the same way as India has developed. Therefore आपका सबसे पहले क्या हुआ है कि India's UPI, तो UPI and QRIS जो है दे हैव पार्टनर्ड. तो अब वहाँ पे अब जैसे कहते हैं कि यूपीआई पेमेंट आपको थ्रू एंटायर पेमेंट कैन बी मेड इन इंडोनेशिया थ्रू द यूपीआई. तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. तो अब इससे इनिशिएटिव से सर लोग जैसे बताए कि अपना इकोनॉमिक टाइज भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो नॉट ओनली स्मॉलर प्लेयर्स, लार्जर प्लेयर्स ऑल्सो डायरेक्ट पेमेंट. तो अब आपको बीच में आप डॉलर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आपको यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट आपको और ट्रांजेक्शन आर बीइंग डन. प्लस ONDC and ION. तो when ONDC is kind of partnering with ION, तो वहाँ पे पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया हैज बिकम पाइनियर एंटायर वर्ल्ड में. इंडिया हैज बीन द पाइनियर इन आपको ई कॉमर्स एज वेल एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में जितने यानी कि आधार इनेबल्ड सर्विसेज हैं, आधार पेमेंट इनेबल्ड सर्विसेज, APES हम जो कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो इंडिया में है वो पूरे वर्ल्ड में वैसा नहीं है कहीं भी. तो अब ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे देयर आर फ्यू वेरी टर्म्स नहीं होता, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको वेलफेयर ड्रिवन होना चाहिए, इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, टारगेटेड सब्सिडीज से लेके आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं. सो नाउ थ्रू UPI, through partnership with QRIS as well as ION with this one. अब आपको क्या होगा कि आपका इंक्लूजन आया, फाइनेंशियल इंक्लूजन आया एज वी हैव सीन इन इंडिया. तो डायरेक्टली इंडोनेशिया इज लर्निंग दैट. तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन आ गया एज वेल एज आपका पार्टनरिंग कर रहे हैं. तो उनका पूरा जो कॉमर्स है वो ई-कॉमर्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो इंडिया में वी हैव सीन अ काइंड ऑफ शिफ्ट जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी आया है. Plus, it has created lot of comfort and convenience for the players. That comfort and convenience will be created. तो ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है इंक्लूजन के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम इट जैसे डिजिटल पेमेंट एंड इसके साथ ही जो एजुकेशनल टाइप जैसे सर ने बताया, तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर ही विजिटेड इंडोनेशिया इन 1927. तब ही विजिटेड इंडोनेशिया इन 1927. सो नाउ इट्स अ काइंड ऑफ नहीं होता कि सेंटेनरी ईयर, जैसे हम यूपीएससी का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, दे आर सेलिब्रेटिंग सेंटेनरी ईयर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल आपको डिप्लोमेसी. एंड थ्रू इट ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ प्रोमोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. सर जो आपने पहला आर्गुमेंट दिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड एंड द सेकंड आंसर दिया. सर मेरा दोनों का इंटरलिंक्ड एक क्वेश्चन है. क्या? हाउ कैन अ कल्चर can act as an instrument of governance and diplomacy? See, as I said earlier, कि आपको कल्चर, आपको क्या है ना कि कल्चर इज काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ बेस. कल्चर क्या होता है, आपको एक्टिंग एज अ बेस कि आपको ट्रस्ट बिल्डअप होता है. बट डेफिनेटली आपको ओनली यू कैन नॉट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. यू नीड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन. सो नाउ दीज टाइज आर काइंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट यू आर बिल्डिंग. तो ये आप ये मान के चलो कि हमारा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो फाउंडेशन है हमारे रिलेशनशिप का, दैट इज योर कल्चर. एंड देन एंटायर स्ट्रक्चर इज बिल्ड थ्रू इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है आपको पूरा रिलेशनशिप है. तो इट इज बिल्ड ऑन दैट. सो आई कैन से कि कल्चर इज एक्टिंग हियर एज द फाउंडेशन एंड एंटायर स्ट्रक्चर इज बिल्ट अप ऑन दैट. तो ये गवर्नेंस आपका. Add on few important things. Look, when it comes to the cultural part, sir is very correct about it. So it is because of the culture there is a system of pluralism is there, that is more in the Indian side basically, but there is a lack on the side of the Indonesia. The way democracy is strong over here, it is not in the same way in the Indonesian side. Although there is a high chance that this type of cultural cooperation may help Indonesia to build its strong base for the democracy also and the pluralism over there. And if you look into a deep, then you realize that when the NAM movement was starting, this Indonesia was one of the important pillar of the NAM. But India emerged as a major global player, but Indonesia was not emerged. I mean, I would say not, the progress was not as fast as the Indian side is there. So their own, I mean, India's own experience shared with the Indonesian side that may help further to strengthen the governance system over there. One more thing I would like to highlight over here.
Like the decisions to send EV over there, are training of the authorities by Indian Election Commission. These all things are actually the part of the greater culture, and without any doubt, our soft power is very, base of the soft power is very strong. The epic of Ramayana and Mahabharata and their stories are very much to the Indian side. But one thing I would like to highlight, this is very interesting. In the recent visit, the head of the state of Malaysia, he made a very specific comment over there. He said, I am not into the politics of India, but I believe that all Indians are my friends, and I am able to connect them better in cultural ways rather than the political ways. That statement was very classic to that. So he himself is highlighting that part basically. So I believe it's going to build up a lot. Okay, Ravi sir, both India and Indonesia are very populous countries. So how do you see that? How can these both countries can utilize their population for mutual economic growth? सर यहाँ पे दो सिमिलरिटीज हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, नो डाउट इन इट, एंड इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. इंडोनेशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री. इन बिटवीन वी हैव चाइना. डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. हम बात करते हैं 1.4 बिलियन एंड 280 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है. बट दोनों का अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखेंगे तो दोनों आज एक ही जगह पे हैं, जहाँ पे भी बोथ हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और यू कैन से वी बोथ हैव अ यंग पॉपुलेशन. अब यंग पॉपुलेशन के साथ साथ इट इज गोइंग टू जनरेट मार्केट इन बोथ द कंट्रीज. द फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमारे पास इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, कि इंडिया की अपनी ग्रोथ और इंडोनेशिया की ग्रोथ के साथ साथ एक मिडिल क्लास डेवलप हो रही है, दोनों कंट्रीज के अंदर ग्रो हो रही है, और जिसकी वजह से दोनों एक बड़ी मार्केट है, और दोनों के पास ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से उन्हें चाहिए. So that is going to help to build us the relations and the economic ties with us. जैसे आप देखेंगे कि हमने बात की कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो हम उन्हें टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं. उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, तो वो हमें रेयर अर्थ मेटल, पाम ऑयल और बाकी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं. सो दैट विल क्रिएट अ वेरी कोहेरेंट सिस्टम, जहाँ पे दे कैन नॉट जस्ट लुक एट चाइना. उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है कि एक बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, एंड नाउ दे हैव taken the help of China and what not, but आज वो अपने आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक यंग पॉपुलेशन है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, नॉट जस्ट एज अ मार्केट बट एज अ प्रोड्यूसर एज वेल. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया बहुत सारी डेवलपमेंट, जैसे सर ने बताया कि दे हैव अ हाई डिपेंडेंस ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम चाइना, स्पेसिफिकली BRI. लेकिन अब जो वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उसमें इंडिया की बहुत सारी कंपनीज और इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो दैट विल ऑल्सो समथिंग कि क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, तो दे ऑल्सो नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स अ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड वी ऑल्सो नीड जॉब्स बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ओवर देयर. Okay, Piyush sir. Sir, although we have talked briefly about it, but what do you see are the major challenges in aligning the strategic interest of both India and Indonesia? Okay. Now, I'll explain it in a little bit broader way. What are the challenges between India and Indonesia? So the challenges are, even strategic challenges are in economic domain also. The first one is the trade imbalance. The trade imbalance is quite high. Jakarta, I mean Indonesia being a very relatively small country to the Indian side, but the trade is in favor of Indonesia. That's the, and this imbalance is either stable or keep on growing. So it is much important for India either to make it equal, or to in certain zone we should be exporter and in certain zone we should be importer. So it may help both of the country to consolidate their industrial base. So it is one of the major challenge. But the very interesting point is that Indonesia is also looking forward to become the center of supply chain, and India is also looking to become the center of the supply chain over there. But India is looking forward to build up its own maritime and road infrastructure to become the center of supply chain. But Indonesia is highly dependent on China for their infrastructural development. Although recently Japan also made entry in Indonesia, but if you compare last 10 major bids offered by Indonesia, that went in favor of the China rather than Japan. If it would have been in favor of Japan, then there could be a greater alignment through the northeast to the great Asian highways connecting to the entire Southeast Asia. But it is going more in favor of China rather than in favor of Japan. So there is a difference
of the supply chain vision in the entire supply chain vision. Our vision is we should become the center, but the Indonesia is having the vision to control a closed zone over there, but allow China to operate in the greater. But we don't look at, and this difference is because the China is, I mean, the Indonesia understand its limitation in terms of becoming a major power in the region. It could be in Southeast Asia, but it's very difficult for them to go beyond that. But the Indian vision is more broader, a major power of the Asia itself, basically. So here one more thing I'd like to highlight. You know, even earlier, before during the Cold War also, the Indonesia was the one who is blocking the Indian positioning in Southeast Asia, because Indonesia is a de facto leader of Southeast Asia. And they believe that looking into the India's geopolitical or geostrategic convergence with many of the Southeast Asian countries, potential of economic trade and relationship with the Southeast Asian country, it may be possible India will replace Indonesia as a de facto leader in the region. So Indonesians are more worried about this political positioning also. So they just want to somehow play, India should be playing over role over there, but they should be able to maintain their independent role. The third important thing, even in case of Indo-Pacific region, their approach is more neutral and consensus driven. An Indian approach is more active, to certain extent relatively aggressive in comparison to the Indonesian side, basically. So this and China factor is one of the major difference, as explained multiple times. The high dependence of Indonesia to the Chinese is a major bone of contention, because that China will always create a trouble to the Indian side. I'll highlight, there's no CECA has been signed between India and ASEAN is there. Non-tariff barriers are there basically between India and Indonesia. Then in case of South China Sea issue, India talk about a general freedom of navigation, and Indonesia want these countries must highlight specific issues over there. For example, when China went for South China 9-dash line, claim up to the 9-dash line, it automatically converged with Indonesian exclusive economic zone. So they wanted India or the other countries to mention this specific idea that it is violating, this 9-dash line is violating the exclusive economic zone of Indonesia. But Indian concern is more like it should be rule based, it should be based on the UN laws or UNC clauses, and there should be multipolarity. It is more a general approach, and the Indonesian approach is a very specific approach. Till date, the Indian ships or Indian warships has a very limited presence in the Indian Ocean region. I mean, and in India, sorry, not in Indian Ocean, in Indonesia. And India is very much interested that Indian ships must be very proactive, must be very active over there. But except the Philippines, Vietnam, no one is ready to engage India in more active way, including Indonesia. But although it look like the things are shifting, once they agree to purchase the BrahMos. So it may be possible that it may go in a similar line. So, but in my opinion, we need to be more patient and understand the concern of these countries. If you look into the population, if you look into the overall military capability, if you look into the economic potential, if you look into the diplomatic network and approach, India is a bigger player. So India should try to be more aligned with the Southeast Asian countries, looking into their perspective. I'm just add on one more dimension. Like, as long as India follow LEP, look east policy, Southeast Asian countries were super happy, and they engaged India in economic term and limited security term. But the moment we went for Act East policies, it actually created anxiety among them. Why? Because in Act East, we extended our strategic cooperation to the East Asian countries, including Japan, to the Southwest West Pacific,
to the Australia, and finally we went for the Quad. So they were also worried कि भाई ऐसा ना हो कि India, which they want to be a mild balancer to the Chinese side, being part of the greater security architect offered by the US, overshadow the centrality and the interest of the Southeast Asian countries. So this is very important for India to regularly highlight about the centrality of the Southeast Asian countries. This is their major problem. कि the Southeast Asia must be made a major stakeholder. Anything happen in the anything happen in the Indo-Pacific region. Sir, Ravi sir told about that few questions which can be asked in prelims. So अगर मेंस perspective से देखें, so how do you see this particular topic can be utilized, or what kind of questions can be asked around this? One important thing, like India-Indonesia relationship, which was more economic and cultural in nature, moving towards strategic cooperation. How it is becoming a fulcrum of India's strategic positioning in the Indo-Pacific region or Southeast Asian countries. This can be asked basically because there is a shift, there is a transition. We are going more close in terms of security and strategic relationship. So that is a changing point, and I believe that they may ask questions. And Indo-Pacific geopolitics. Yeah, Indo-Pacific geopolitics is there, problem and challenges are there. What should be the India's concern? How India swiftly position itself in looking into the mindset of the many Southeast Asian countries. These are the major challenges. Sir, would you like to add anything? सो बेसिकली एक तो यही है, लाइक वी कैन टॉक अबाउट अ होल पोर्शन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहे हैं हम, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तो रेयर अर्थ मेटल से रिलेट करके साइंस एंड टेक में या इकोनॉमी में हम वहाँ भी एक क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं. दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जो हमने बात की, तो जब हम बात कर रहे हैं या ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ एक कोरिलेट करके हम बात कर सकते हैं ऑन द फ्री नेविगेशन और द राइट ऑफ नेविगेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट इज ऑल्सो अ राइजिंग टॉपिक आफ्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो इस बार के मेंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ उस तरीके की चीज पूछी जा सकती है, और उसमें इंडिया का रोल क्या होगा ये भी पूछा. Geography point of view से भी कोई ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से. सर, would you like to add any? मुझे तो बस ये लगता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है पिछले लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है. तो आई फील कि गवर्नेंस से अराउंड 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर 2 में. तो ई गवर्नेंस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स नहीं था एग्जांपल दे देते हैं, आपको कनेक्ट कर देते हैं विद इंडोनेशिया, तो दे फेच एक्स्ट्रा मार्क्स. तो आपको, मेरे को लगता है कि जीएस पेपर 2 में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पेपर 1 में अगर कनेक्ट करते हैं वही कल्चर से आपको, तो कल्चर से आपको टेम्पल प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर जो आपको मोदी जी ने विजिट किया है, तो डेफिनेटली आपको ये चांसेस हैं आपको. ओके. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग, सर एक क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड. आई थिंक सुजय मुखर्जी एंड सर आयुष ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इज चाइनाज मिसाइल लॉन्च इन न्यूक्लियर शिप रिलेटेड टू दिस इवेंट? No, sir. I mean, this is going to be, it's a big anticipation only. Anticipation only. We cannot say officially anything. Definitely, this is. मतलब ब्लैंक कोऑर्डिनेशन. okay, so that's all. I think I hope Ayush आपको आपका आंसर मिल गया होगा. So we have come to the end of this session, and we hope we have taken this topic because it seemed that it is important. Either एक पूरा इशू को क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस इशू कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर एग्जामिनेशन. एंड आई होप कि जो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दिया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड keep on appreciating this program. We are here to make sure that such kind of topics are covered in multidimensional way by different faculties, so that it can help you in your preparation by condensing this topic as long as 30 to 45 minutes. So thank you very much. Till next Friday. Jai Hind.